मिताली भी थी, तो वहां पे से सैल्यूट जब हो रहा था तो ऐसे से आप ही को देखा गया कि सैल्यूट नहीं हो पा रहा है। तो सर वो लोगों ने देखा वो एपिसोड, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जो तबका आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो वायरल क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं, और आई थिंक सैल्यूट तो ठीक ही किया होगा मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है एपिसोड में सैल्यूट था, मैंने भी किया होगा। ओह अच्छा, किस 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 चीज पे सैल्यूट था मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, सॉरी। मिताली भी थी, तो वहां पे से सैल्यूट जब हो रहा था तो ऐसे से आप ही को देखा गया कि सैल्यूट नहीं हो पा रहा है। तो सर वो लोगों ने देखा वो एपिसोड, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जो तबका आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो वायरल क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं, और आई थिंक सैल्यूट तो ठीक ही किया होगा मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है एपिसोड में सैल्यूट था, मैंने भी किया होगा। ओह अच्छा, किस 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 चीज पे सैल्यूट था मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, सॉरी। Okay, welcome boys and girls. Let's see. यहाँ पे देखते हैं गजनी का रीमेक बहुत चल रहा है आजकल, तो एक बार भाई साहब का देख लेते हैं क्या हो रहा था। तो welcome everyone. So let's start with Miss Auntie जी। आप जा रहे हो ना फिल्म? सो इसका भी एक गजनी का एपिसोड टाइप्स लग रहा है, ये भी एक नया मूवी निकाली थी, बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं इसका टैलेंट। ठीक है, आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। Nobody has forced you. आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ. They shouldn't boycott this film because it's such a beautiful film, and I want people to see me and Amir on screen. Na, after like 3 years, we waited so long. So I'm like, please don't boycott this film. Please don't boycott this film because it's like actually boycotting good cinema. And people have worked so hard. We've had 250 people work on this film for like 2.5 years. So 250 people have worked on this for 2.5 years. So that is her appeal, and please don't boycott the movie. So as you can see, Nipunji, welcome sir. Akanksha, welcome. Thank you ma'am. Gloria ji, welcome ma'am. Judy, thank you, welcome. Okay, so let's see a little bit of what has been happening. Weekly roundup करते हैं, जो यहाँ पे जोरों शोरों से चल रहा है यहाँ, how to become a boycott legend. Okay, so पहले से देखते हैं क्या क्या हुआ है। ऋतिक की भी बैंड बजा देंगे, no problem. So okay, let's start from here. So I think SSR FC, welcome. Priya ji, welcome ma'am. Amazing human. Already आपका नाम amazing है. Thank you sir. Namaskaram. Thank you. Namaste. Namaskaram. Okay. Justice for Sushant Singh Rajput. Boycott Chelsea. Daxi. यार मैं थोड़ा अंजलि सिंह राजपूत जी, welcome. Nobody wants to see you in Amir. Absolutely. Dhoom 3 plus PK plus Tubelight. Listen. Please, your comments are amazing. Please keep them coming. Dhoom 3 plus PK plus Tubelight. So guys, this show is nothing but the creativity of everybody out there on the internet who is actually showing their anger and frustration towards everybody, and anybody who wants to, please join. You're welcome to join. The more the merrier. Shubh Sinha ji, welcome. Rip Bollywood, bilkul. Mehak Mother, welcome. Okay, so okay, I'm seeing some very new names. Thank you, welcome guys. Okay. समझ में आ गया इश. I think आपका ही है ना वो profile picture. That's what I was thinking. Okay. Poonam Singh ji from Facebook. Okay, welcome ma'am.
Okay, so let's see how can you become a boycott legend. So those of you who want to become boycott legend, यार क्या करना पड़ता है ना, तुम लोग हम लोग if we are in kid avatar, okay, so we just boycott, we are like we don't watch it, we just don't care about the movie, okay, that's sometimes me, that used to be me. You know, I'm like okay, मेरे को देखना नहीं है, बस छोड़ दिया, okay, so 10 साल से ये जर्सी वुड का I'm trying to avoid. Then if you are a grown up, if you're an adult, if you're a woman, a man, then तुम खुद बॉयकॉट करते हो और दूसरों को भी बॉयकॉट करने के लिए पूछते हो, ठीक है. But Lotus 550, okay, I hope you can see the name here. Lotus 543 is the person who created this legend ka template. You not only boycott, you ask others to boycott and contribute to negative IMDb ratings. मतलब देखिए, आपको legend बनना है कि okay, so thank you Lotus 543 for this. एक second, I just want to say exactly right. Nobody watching our films, auntie. Make up your mind. Absolutely. Leena G, Leena Sukhdev from Facebook. Welcome, ma'am. Thank you. Okay. So we are fighting against this Kabar Bollywood not only for SSR but also for our country. Then in Vishakhapatnam, in INS, I know, Vishakhapatnam invites Selvan to. That was the biggest joke of the century. Here. I'll show that thing. Thank you. Shalaji, welcome, ma'am. Okay, so hello Judy, hello Aish. Okay, fantastic. So let's do this. So आपको क्या बनना है boy? आपको legend बनना है कि क्या बनना है सोच लीजिए. So next, ये भाई साहब का देख लेते हैं. यार ये ऑडियो क्या 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 हुआ? ओके, एक सेकंड. तो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट, आपको याद ही होगा, बस 2 हफ्ते पहले, 2 दिन पहले, उसका मूवी का रिलीज का 2 दिन पहले ये भाई साहब बोल रहे थे कि अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो ही इज अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज से तो मुझे उस बात का दुख है और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ. और आई थिंक बाकी अगर लोगों को जिनको फिल्म नहीं देखनी है तो मैं उस बात की इज्जत करूंगा. क्या कर सकते हैं. मैं चाहूंगा कि ज्यादा सॉरी, ये कोई एडिट किया यार ऐसे. आई जस्ट वांटेड टू. आई थिंक बाकी अगर लोगों को जिनको फिल्म नहीं देखनी है तो मैं उस बात की इज्जत करूंगा. क्या कर सकते हैं. मैं चाहूंगा कि Okay, so this is I just want to think that this is SSRians का कमाल, but कोई YouTubers है जो सोचते हैं कि SSRians का कमाल नहीं है ये all this editing and all this boycott talent and all that. तो पता नहीं कब पता चलेगा उनको, but trust me. पूनम सिंह जी बोलती है कि जब से एसएसआर का मर्डर हुआ है तब से आई हैव नॉट सीन एनी मूवी. थैंक यू पूनम जी, दैट इज द सिंगल बिगेस्ट ट्रिब्यूट दैट वी कैन गिव टू सुशांत. Thank you for doing that and sharing that with us, because that's inspiring all of us to, you know, stay together in spite of it being 2 years plus. बॉलीवुड वाले पब्लिक को आंख ना दिखाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी पब्लिक ने लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया. Okay, so hello Gloria. Okay, welcome. Okay, nice. So let's see this next. आजकल if you're noticing headlines, there is something cooking in the backstage. I don't know if this is a guy or a girl or whoever this person is here, but this right here you can see that मेरे साथ दोस्ती करने के लिए है बेबो रेडी, ठीक है, और एक नया प्रोडक्शन, एक नया मूवी निकाल रही है. सो बच के रहना रे बाबा, दैट्स व्हाट आई कैन से. एंड फेक्टा जी और बेबो जी, इफ दे कम टुगेदर तो कंटेंट में तो टट्टी टट्टी भरेगा. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू गाइज आर नॉट वाचिंग व्हाट वी आर मेकिंग, दैट्स व्हाट आई कैन से. सो बहुत बहुत ज्यादा याराना हो गया है आजकल. सो ओके, सो किसी ने पोस्ट किया ये
इट सीम्स ये कौन सा बुक माई शो का ऐप है, तो दे आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू सी टिकट का सीटिंग अरेंजमेंट, ये वो कितना हाउसफुल हुआ है एंड ऑल दैट, एंड लग रहा है कि यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है. वांट टू विटनेस मिरेकल्स, आपको मिरेकल्स देखना है, आपको चमत्कार देखना है, तो देन फिनिश बुकिंग फॉर लाल सिंह चड्ढा. सो वो लिखते हैं कि यहाँ पे कुछ धमकी की तरह लग रही है, ऐसा नहीं है कि प्यार से कोई बोल रहा है कि मेरा मूवी देखो, ठीक है. तो दिस इज द लाल सिंह चड्ढा का वांट टू विटनेस. अरे ओके, वन सेकेंड. Hello, sir. Welcome, welcome. I'm just muting you. I think there's a little bit of background noise. Okay. You can unmute yourself. Garoji. हाँ जी, अर्चना जी, जय श्री राम, हर हर महादेव. Thank you, Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. How are you? Yes, I am fine, thank you. And what about you? I am doing great, sir. अभी बॉयकॉट का ट्रेन पे चढ़े हुए हैं, तो मतलब अभी तो रुक नहीं सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा हैप्पी और हाई है. हाई मतलब वो ड्रगी वाला हाई नहीं है, बस हैप्पीनेस का हाई. हाँ, जैसे कहते हैं ना, हाउस द जोश, हाई सर, वो वाले हाई है. हाँ, No, वो वाला है. बिल्कुल, you are doing a fantastic job. इनको जैसे कहते हैं ना, इनको भूनते रहिए, रोस्ट करते रहिए. और अब तो सचमुच में इनकी वाट लगनी शुरू हो गई है. मतलब अच्छी वाली लगनी शुरू हुई है. और जी, जो मैंने सुना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इनसे पैसे वापस मांगे हैं, इनको शौक में चले गए हैं. अरे शौक में चले गए भाई, थोड़ा लंबे शौक में जाओ ना. तुम्हें बहुत शौक है, बहुत शौक है, बहुत शौक है ना यहाँ पे कहने का कि हमें यहाँ डर लगता है. डर अब लगेगा. डर क्या होता है तुम्हें अब पता लगेगा. अभी तक मजे में Exactly. बदनाम कर रहे थे भारत को. आप पता लगेगा डर क्या होता है. सड़क पर आ जाओगे एक दिन, अगर अब भी नहीं सुधरे तो. आमिर खान इसका क्या कर सकते हैं सर. ये ध्रुव टट्टी को लाल सिंह चड्ढा इज अ मास्टरपीस. I have seen Forrest Gump and loved it, but it is better because it's more relatable to historical events. ये पैदा भी नहीं हुआ था शायद वो जब वो historical events दिखा रहे थे. Also, Amir's character is slightly more cheerful and uplifting than Tom Hanks one, which I like better. क्या review है यार. This is called. हाँ बोलिए. नहीं बोलिए. This is called B&D. आपने B&D का सुना है शॉर्ट में? नहीं क्या है. हमारे अमीश देवगन जी एक शो करते थे ना अपने चैनल पर, न्यूज 18 पर. तो कांग्रेस के एक नेता ने एक दिन उनसे कहा था, मैं नहीं कह रहा, तो कांग्रेस के नेता ने उनसे कहा था कि आप भड़वे और दलाल हैं. ठीक है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म चल चुका है B&D, क्योंकि हर जगह ये बात बोली नहीं जा सकती, हर चैनल वाला बोलने नहीं देता. तो याद रखिएगा इसको आज के बाद. ये B&D यूज करिए, आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा. जी, किसी को रिपीट नहीं करना पड़ेगा. आप भी याद कर लीजिए, जो सुन रहे हैं वो भी याद कर लीजिए. B फॉर बॉय एंड D फॉर डॉग. B&D जो भी इस तरह का है, ये राठी जैसा, क्या ये तो B&D है यार. बहुत बड़ा B&D है, नंबर 1 का है. तो ये जर्मनी में चला गया और वहां पर जाकर कह रहा है मास्टरपीस है. मेरे ओपिनियन में जरूर देखो भाई, तुझे कितना कट मिलेगा, पहले तो ये बता तू. सो इसका भी देखते हैं ट्विटर में क्या क्या हुआ, पब्लिक ने क्या क्या दिया इसको तोहफे. वो भी देखते हैं. इसकी पोल खुलनी अब अच्छी तरह शुरू हुई है, और ये कह रहा है कि मैंने फॉरेस्ट गंप देख ली है. अच्छा, जब तूने फॉरेस्ट गंप देख ली है तो अब हमें तुझे लाल सिंह चड्ढा देखने की क्या जरूरत है. मतलब इंग्लिश में कुछ अलग देखा है, हिंदी में कुछ अलग दिखेगा क्या? जब तूने देख ली तो अपने खुश रहे हैं. और कह रहा है कि हाँ, ये कह रहा है कि आमिर खान के कैरेक्टर को अपलिफ्ट कर दिया है आमिर खान ने. अबे तेरे को पता है कि टॉम हैंक कौन है? कितना बड़ा वो हॉलीवुड का एक्टर है. आमिर खान उसको अपलिफ्ट करेगा? आमिर खान अपनी चड्डी तो अपलिफ्ट कर ले पहले, हैं? अभी जो गिर गया वो गिर करेगा. जो गिर गया वो गिर गया, क्या करेंगे. सो
आजकल बहुत सारे ऐसे वाले आ रहे हैं गौरव जी, यहाँ पे कोर्टनी हावर्ड, आई डोंट नो ये कौन है, बट वो ब्लू टिक वाली दीदी है. Just like a box of chocolates, when it comes to remakes, you never know what you are going to get. Okay, so it seems it's surprisingly good. Forrest Gump remake. It finds a renewed, revived purpose, telling its reworked tale. वो जो writing ये workshops में हमको बोलते हैं कि power of three. Okay, so renewed, revived, reworked. तो जो पूरा वो राइटिंग टेम्पलेट वो पूरा उठा के डाल दिया वहां पे. ये पहली बात, ध्रुव राठी को तो मैं फिर भी जानता हूँ, उसकी कुछ पहचान है. ये भूतनी कौन है मेरे को तो पता ही नहीं. कर्टनी होवर्ड. एब्सोल्युटली. क्या कह रही है, चॉकलेट चाहिए इसको? जस्ट लाइक बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बहुत ही अच्छा लग रहा है. मतलब इतना सरप्राइजेस है इसमें कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मतलब एंजॉय करे इसको, ये मूवी को. अरे तू किसी भी थोक की दुकान पर जा, वहां से चॉकलेट के बड़े बड़े बक्से खरीद ले, आराम से चूसती रहे उन्हें, तेरे को मजा आ जाएगा. यहाँ इसको देखकर क्या करिए, तेरे को चॉकलेट ही चाहिए. और क्या कह रही है? नहीं गुड रीमेक है, रिन्यूड, रिवाइव्ड, पर्पस. हाँ, ये आपने अच्छा दिखाया. ये हमारा तो हमेशा से ही चल रहा है ना कि बिल्कुल जस्ट कॉपी मारो, छापो 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 ऐसे. लाल सिंह चड्ढा है एक बहुत ही बकवास. अरे ये कोई अर्चना जी, सॉरी रचना जी, ये कोई पहली कॉपी थोड़ी है बॉलीवुड की. ये तो हमने अब ध्यान देना शुरू किया है, इन्होंने शुरू से कॉपी ही की है. कॉपी कैट ही रहे हैं शुरू से. इनका ओरिजिनल काम कितना है आप देख लीजिएगा. और ये तो अपनी फिल्मों की भी कॉपी कर लेते हैं. नदिया के पार आई थी, उसके हम आपके कौन बना दी थी, पता होगा आपको. एग्जैक्टली. और हम उसको सुपर डुपर हिट करा देते हैं. ये तो इनका ओरिजिनल. अभी तो समझ में आ गया. हाँ, ये दिखाइए जरा, करीना कपूर वाला दिखाइए जरा. ये गिड़गिड़ाई थी क्या? ओके, एक बार सुन लीजिए क्या क्या बोल रही है. मैंने सुना ही है, बस देखा नहीं. आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ. नोबडी हैज फोर्स्ड. तो नहीं जा रहे ना, जा रहे हो ना फिल्म देखने, आपकी जो आज्ञा, नहीं जा रहे. It's such a beautiful film, and I want people to see me and Amir on screen. Na, after like 3 years, we waited so long. So I'm like, please don't boycott this film. Please don't boycott this film, because it's like actually boycotting good cinema. And people have worked so hard. We've had 250 people work on this film for like 2.5 years. अरे ये तो फोर्स कर रही है हमें. क्यों फोर्स कर रही है हमें? हमें फोर्स करती है और फिर कहती है फोर्स नहीं कर रहे. भैया फोर्स करने की जरूरत नहीं है, और थूक कर चाटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. एक बार so महक जी का एक बार ले लेते हैं. ध्रुव राठी is not a big person, he just bluffs on his YouTube channel. Mahak ji, I keep thinking about whenever I see his I just keep through and try to see what he's talking about. He is an expert on I think 1500 different topics. I mean, I have not seen a single person be so prolific and so talking about all topics on the planet Earth. He has a script, and if you see his video, he'll be reading from wherever he. पता नहीं कोई रीडिंग मारता है, फुल रीडिंग. और उसकी जो पिच होती है ना वॉइस की, वो भी सेम रहती है. आप देखिए, ये हुआ, ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, उसने ये करा, उसने वो करा, वही पिच रहती है उसकी. और जल्दी पढ़ के कल्टी हो जाता है. एग्जैक्टली. एक बार ये देखते हैं. आयुष, वेलकम. हाउ आर यू? हेलो, नमस्ते. ये देखो, ये अभी गौरव भाई ने कहा ना कि अपनी फिल्म का ये लोग कॉपी बनाते हैं. ये तो एक्टिंग का भी कॉपी लग रहा है. धूम 3 में ऐसे ही था ना, बंदे हैं उसके ऐसे करके जो बोला था, ये तो उसका कॉपी लग रहा है. और सबसे हैरानी वाली बात हो रही है कि स्पोर्ट्स हो या आर्मी, इसमें आपको फिजिकल और मेंटल दोनों होना चाहिए.
इतना ऐसे अभी का डिस्टर्बेंस है थोड़ी सी। पहन के okay yeah so I पहन के yes, and you are acting like this, it's so shameful. So I'll just show you accessories का creativity यहाँ पे yeah. So I'll just show you the creativity here. डिस्टर्बेंस आ रही है अर्चना जी, कुछ आवाज सुनाई नहीं आ रही आपकी अर्चना जी। Let me see. Ayush, am I okay? Yeah. Okay. Then there might be some feedback from you, Gaurav ji. देख लीजिए आप please एक बार. Yeah. Okay. So let's see this one. Okay. Ayush says sound is very disturbing. Oh, okay. So maybe it is from me. Oh, now it is okay. Okay. Maybe, okay. Let's see if everybody mutes themselves when they're not talking. Okay, so thank you guys for letting us know. I think there is some kind of disturbance. देखते हैं if yeah, I'll just also stay mute when anybody is talking. कुत्ता ऐसे अच्छी एक्टिंग कर रहा है आमिर खान से। So एक बार exactly how peace and trust 250 technicians have worked for 3 years it seems, इसलिए हमको देखना है. She is suddenly feeling bad for movie technicians. That is the biggest joke यहाँ पे. Yeah, Ayush बोलो. Yeah. इसी लाइन पे टेक्नीशियन पे मेरे को हंसी आई कि इतना मेहनत करके भी तुम्हारे फिल्म में फ्लॉप कैसे हो गया। Exactly. अनुज जी सॉरी सर अभी एक्चुअली मेरे को 1 घंटे में क्लास है तो इसलिए आई हैड टू मूव दिस अ लिटिल बिट अर्लियर. आई एम रियली सॉरी. आई नो दैट you know after 10 o'clock it's works for a lot of people. I'll try my best to keep that time. और Okay. ये सीनियर सिटीजन बनते जा रहे हैं सारे, उसके बाद भी इनको लगता है कि कॉलेज के स्टूडेंट की तरह अपने को दिखाकर बेवकूफ बनाकर हमें अब भी हिट करा लेंगे अपनी मूवी को कि कौन सी डाई लगा कर आते हैं, कौन सा। अरे भाई सबको पता है अब सीनियर सिटीजन हो चुके हो तुम, अपनी क्या कहते हैं ना, अपनी तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में, अपनी मर्यादा में रहो। अब रोल करने तो बाप के रोल करो तो हम तुम्हें पसंद फिर भी कर लेंगे, दादा के रोल करो भाई, तब तो बात बनेगी। हाँ कमाल है। I know. So, yeah आयुष बोलो. बाप दादा का रोल क्या करेंगे, ये ठीक से अपने बच्चों के बाप नहीं बन पाते। देख लो बच्चा कहाँ बाप कहाँ। अरे ये तो आमिर खान तो जब बर्थडे केक काटता है अपनी बेटी का तो भी ये नाम मात्र के कपड़े पहनकर काटते हैं, इनसे संभाले तो जाते नहीं है इनके बच्चे। हाँ और अब तो इनकी बेटी बेटे दामाद सब लगे पड़े हैं कि बॉयकॉट मत करो, देख लो बहुत अच्छी फिल्म है। पूरे परिवार को, पूरे खानदान को लगना पड़ रहा है प्रचार में। इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या होगी। लेकिन हमने किसी की नहीं सुननी। अब हमने जो भी आना है, जो कहेगा मूवी देखो, उसको सीधे जूता मार के भगाना है, जूता मार के, लात भी नहीं। Yesterday saw a sad thing. SSR warrior was defending herself so much. So-called SSR warrior was defending herself so much for promoting Lal Singh Chadda and Amir Khan. It was just so sad. We just boycott मतलब boycott है यार. We just can't have any exceptions, and especially when this guy has been a serial offender. मतलब इसका तो history पता है हमें. You know what he has been doing and everything. So we just have to make sure. तो ये Reddit पे trend. Thank you, Sarah Springs. Welcome, ma'am.
So ये Reddit पे ट्रेंड हो रहा था. Who did it better? Okay, so KRK या आमिर खान. आमिर खान ने जो फिल्म में रोल किया है ना, इसकी असली में हालत वैसी होने वाली है. ज्यादा दिन नहीं बचे हैं. ये ऐसे ही आएगा मीडिया के सामने. सब बर्बाद हो गया, लुट गया, ये क्या हो गया, आप लोग कौन है, मेरी मैयत कहाँ है. अच्छा, एक मैं क्लिप देख रहा था जिसमें केबीसी का वो इंट्रो था, Yeah. जिसमें कुछ तो उसमें दिखा रहा था कि सब सैल्यूट मार रहे हैं, ये भाई साहब सैल्यूट नहीं मार रहे. Exactly. So I was just showing that सैल्यूट video. नहीं मारते, ये नहीं मारते. बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है. और अभी ये एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था कि लाल सिंह चड्ढा देखने के बजाय 300 रुपए की एक लाल चड्डी खरीद लो, वो 1 साल तक काम दे जाएगी. फिर भी वो ज्यादा फायदेमंद है बजाय कि यहाँ जाके अपना टाइम बर्बाद करो, पैसे बर्बाद करो और दिमाग में कचरा लेकर आओ और इनकी जेबें भरो. तो मैंने कहा रिपीट कर दूं एक बार, ही तो सुन ही रखा होगा आप लोगों ने. Yeah, so I'll just show this video 1 second. So Ayush, whatever you were saying, right? Yesterday he became Gajini when somebody asked him why he's not saluting. भी थी तो वहां पे से सैल्यूट जब हो रहा था तो ऐसे से आप ही को देखा गया कि सैल्यूट नहीं हो पा रहा है. तो सर वो लोगों ने देखा वो एपिसोड, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जो तबका आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो वायरल क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं. और आई थिंक सैल्यूट तो ठीक ही किया होगा. मुझे याद नहीं आ रहा है एपिसोड में सैल्यूट था, मैंने भी किया होगा. ओह अच्छा, किस 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 चीज पे सैल्यूट था मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, सॉरी. अबे गजनी के रोल में घुस गया क्या हैं? गजनी के रोल में घुस गया पूरी तरह से. डिमेंशिया हो गया तेरे को, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. तो पब्लिक बोलते हैं कि ये सब लोग अभी इसको दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा था. He is literally sitting next to an army officer, that lady, and everybody, literally everybody, I don't know how many people are there capacity वहाँ पे सब लोग खड़े होकर सैल्यूट कर रहे हैं. वो बोलता है कि सैल्यूट का था क्या वहाँ पे कुछ करने के लिए. मतलब यार हम लोग पागल है क्या? So this amazing lady, she comes with her life history and everything, and everybody starts to salute her. And of course, अगर आपने ये किया होगा आपकी sentiment को वो करने के लिए के लिए जैसे ये का overview किया था. But you have to understand that Amir Khan is full of shit based on what he has just said. Salute का कुछ खास है. You think we short term and Mag ji यहाँ पे ट्रस्ट किया कि इन सोचने के लिए हम लोग इसका नहीं किया था, सैल्यूट नहीं किया था. क्लियर कई एंगल से देखा है हमने. इनसे कोई पूछता नहीं था पहले, आप लोग इनसे पूछने लगे हैं, जवाब नहीं होता इनके पास. ये डिस्टरबेंस मेरे को ही आ रही है और लोगों को भी आ रही है, प्लीज कमेंट करके बताइए. आई थिंक आपका जो ऑडियो सिस्टम है आप जरा कमेंट में देखिए, कमेंट में भी लोग लिख रहे हैं.
mute yourself. And try to log back in Gaurav. Yeah. So I was just looking at this. So it seems when you're feeling uncomfortable, try to make yourself comfortable. So they can do it MS Ravaji, I think you are Okay, let's see. Let us see now. Okay, so when I am talking, please only one question you can say. If there is any disturbance, let's see. I will also try to log back. Yeah. So I just muted Gaurav. Yeah. I think इसका ही शायद बेचारा हो रहा है शायद. He might have to log back in. Okay. So let's hope that we can hear anything. My comments here are coming a little slow. Still a lot of disturbance. Let me try to log back in while you are. Okay. How about now? I've removed him from the screen. Will that work? Sorry guys for the आप जा रहे नहीं बहुत सारे पेज log back in and I'll try to take you again. Okay, so here Paramount Pictures says if you love Forrest Gump, absolutely, it has been so much fun and encouraging to crazy. Yeah, so Paramount Pictures also, if you love Forrest Gump, you will love Lal Singh Hydra. This guy has now come to this. Okay, so यहाँ पे देखिए एक बार fake reviews बहुत सारे आ गए. ये पता नहीं कौन से magazine है जो Bollywood bubble OTT so there's still a lot more magazines and avenues that हमको देखना पड़ेगा. If we are consuming news from Zoom or ABP and all these places, we have to make sure that we are actually not subscribing to these people.
Hello, hello, hello. That was my mic. Okay, thank you, Mehak ji. I think that was my mic. So let me try to talk like this, guys. And I'm going to use my computer audio. My son has been telling me, my 13-year-old, ki I need to buy and invest in a mic. So obviously, free में वाला जो mic है, उसके साथ ही काम चला रहा है. तो 2 साल से obviously ऐसे ही होगा ना production quality. So Mech Namara more. What Mech Namara's moron? Okay, thank you, Anand Singh ji, for letting me know that. I am so sorry. It might have been my mistake, Gaurav. I have added you back in. Okay, excellent. Sorry guys, sorry for all the trouble. It is my mic. वो free में देते हैं ना, वो वाला mic था, तो obviously थोड़ा life में problem है. Okay, so let's try to see. Oops, I already played her. I wanted to show you a little bit of news before that happened. Okay, so पहले ये आंटी, ये प्लास्टिक आंटी को देखे बिना एक बार ये न्यूज़ देख लेते हैं. So watch this. This is Swara Bhaskar watching Lal Singh Chadda in a movie theater. Okay, so when sorry, 1 second. When Swara Bhaskar went to watch Lal Singh Chadda first day first show, this was her reaction. ठीक है, तो ये है ये लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीन देखकर लोग भागे हैं या इसकी ये जो सूर्पनखा वाली हंसी है उसे देखकर भागे हैं? मैं तो ये भी समझने वाली. So iska I just want to show you, people are doing reviews of how fake reviews have been coming up with for Lal Singh Chadda. If you notice what is happening across the board, एक ही तरह रहते हैं जो एक बार दिखाते हैं, रुकिए. Everybody has the same copy paste format. यहाँ पे रविंदर राय जी लिखते हैं कि it's interval time. When I clicked this picture, it seems भक्तों की जलेगी जरूर, it seems. Okay, and then कोई ये रविंदर राय जी है और तो ये मोहम्मद औरंगजेब शेख. Okay, तो ये लिखते हैं कि moving doing good business as compared to after lockdown released movie. Same picture भाई साहब, everybody same angle से निकालते हैं. It is interval time when I clicked this picture. Sarwar Khan लिखते हैं कि गीजर वाला, I don't know ये क्या वाला है ये बंदा, but भक्तों की जलेगी जरूर. So, wait a second. And let me put some other picture here. Okay. Manoj 1946 में 1496 में पैदा हुए हैं ये भाई साहब. ये लिखते हैं कि it's interval time when I click this picture. So ये this is like the toolkit of fake reviews, right? So as you can see, everything. Okay, thank you guys. I'm just so amazed at your patience that you stick around in spite of my audio issues. I cannot believe half an hour, 40 minutes I did this to you guys and you're still here. I am just amazed.
Thank you. Okay, so maybe subscribe. I know. Kartikeya 2. Kartikeya 2, see, I was trying to do some research on whether he's an Nepo kid or not. I didn't see anything. I really honestly don't know who is producing it and everything. So honestly, I have no idea, but I cannot comment on that yet. हाँ, सारे उसकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो चेक करिए, उसके Yeah. बाद ही अगर जाना है तो देखने चाहिए। वैसे भी मैं आपको बताऊं, Yeah. आपको अगर कोई मूवी देखनी भी है, आप थिएटर मत जाइए, मेरी बात सुनिए। 10 या 15 दिन के अंदर ये मूवी टीवी पर आ जाएगी, आप तब देख लीजिएगा। आप थिएटर में जाके क्यों उनकी कमाई करा रहे हैं? आप प्लीज, आप आज देख नहीं रहे, आप कोई सी भी मूवी हो, कितनी बड़ी हिट हो, 1 महीने के अंदर टीवी पर आ जाती है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आपको मूवी की कहानी में कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ लग रहा है, प्लीज थिएटर्स मल्टीप्लेक्स में मत जाइए, वहां इनकी जेबें मत भरिए, ठीक है? Mikunji was also saying the same thing. If you really want to watch and you don't want to give them money, you can watch pirated stuff. तो इनकी हाँ, अरे देखिए, पायरेटेड देखिए, सब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जो देखना है देखिए, इनकी कमाई मत कराइए प्लीज। So अनिल जैन जी लिखते हैं कि golden chance to impress your family, book full theater of लाल सिंह चड्ढा at nominal cost of only 2 tickets. ये क्या चक्कर है? 2 टिकट की कॉस्ट में पूरा थिएटर मिल रहा है क्या? ये क्या थोक में भी कबाड़े की बिक्री हो रही है क्या? स्क्रैप इज बीइंग सोल्ड। Exactly. So let's just see Queen of Bollywood status. 1 second, I just have to show you. Okay, no, ये हो गया. So आजकल अंकल्स टूट पड़े हैं हृतिक अंकल की तरह. Trolls cannot stop a good film. Okay, ये कौन गधा आया? मिलिंद उषा सोमन, वो जो ट्री लवर एंड रनिंग पर्सन, उसका बायो, वो जो नंगा होके भागा था। हाँ बिल्कुल, हाँ, उसका बायो बस वही है। ट्रोल्स कैनॉट स्टॉप अ गुड फिल्म. तो यहाँ पे स्किन डॉक्टर जो उनका यूट्यूब चैनल भी है, Millen, unless you actually want movies to suffer, try to be humble in the face of resistance. You're showing Kareena Kapoor kind of arrogance. Don't challenge the audience by name calling. Exactly. Trolls हमको बोल रहे हैं, right? So he's warning him. At least Amir is smart in his matter by projecting a humble face despite boycott calls. Okay, but ये लोग मिलिंद सोमन एंड अर्जुन कपूर, ये सब लोग थोड़ा ज्यादा ही मतलब उछल रहे हैं आजकल, कुछ भी बोल के। ऐसा हो जाता है ना, रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाते उसके। रचना जी, आपने सुना होगा। Exactly. अभी इनकी एरोगेंस बहुत डेकेड्स ओल्ड है। मतलब मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बॉलीवुड की कर रहा हूँ। इतनी जल्दी वो एरोगेंस सर से उतरने वाली नहीं है। अभी इनको थोड़ा और पटकना होगा। अभी बस मत करिएगा आप लोग। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, हम लोग रहम, डोंट show any mercy. So you have to be ruthless and merciless. Then only you can shed off some of the arrogance, a little bit of arrogance. आपको, you can't afford to be slack or lax. So keep blazing all your guns. Exactly. Exactly. We have to continue doing what we are doing. Yes, Anuji, you're right. It is a Telugu movie, and that gentleman doesn't seem to be an Apu kid, but I don't know yet. So I'll have to check that before I can comment. But here, Yo-Yo Funny Singh ji, he is also helping us quite a bit. वो बोलते हैं कि random but honest survey. Please screenshot in replies below. Book my show of Lal Singh Chanda's tomorrow evening show from a theater near you. And literally जो भी लिखते हैं, literally every single seat is green and available for us to book. That is how they are, like screenshot after screenshot after screenshot. So whatever we were seeing earlier, जो 40% book हो गए थे, pre-book हो गए थे, सब कुछ, that was all fake, as we now know. And we now know that the boycott is working. So we just have to make sure we keep our eyes and ears open and
So this was, so guys, the reason why we have to go through all this is because we understand their toolkits and try to understand what they're doing. Okay, so let me just show you Yes, what. right. Yeah. But RNS, I just want to remind you one thing. Earlier, Anurag Kashyap said, just a couple of seconds, sorry, 30 seconds. That's okay. Anurag Kashyap said in a tweet that Sushant is everywhere, something like that. Sushant is boycotting our films, a gang. Do you know about that? So Anurag Kashyap is the same guy who talks bullshit like this, right? एक second आपको मैं play कर दूं ऐसे ही because वो उनका भाई साहब का topic आया तो मैं बता रहा हूँ आप कोशिश करो, डोंट बी वो टोन के साथ जो आपकी निकलेगी ना, मैं बता रहा हूँ वायरल होगा। प्लीज लुक गुड, हॉरर शो मत चालू करो। तुम भी कॉम्प्लेक्स हो, तुम जानते हो कि ये वायरल हो जाएगी, पब्लिसिटी को मिलेगी। करते हैं हां, व्हाट इज दिस कमेंट बाय मी बिकॉज़ आई बिग अ बुक रनर। I have उसको jealousy आ रही है, it seems, because his boobs are bigger than Taapsee Pannu's boobs. That is what his thing is. ये सिद्धार्थ या ये जो भी है वो बोलता है कि तुम प्लीज तोंद वोंद लगा के just don't go outside, get fit or whatever, and then he's like मेरे boobs are bigger than Taapsee Pannu's boobs. So that is the same gentleman, right? तो ये भाई साहब जो बोल रहे थे कि सुशांत is everywhere and boycott is everywhere and Sushant's fans are doing this and all that, and it seems we are living in strange times. वही था ना वो इंटरव्यू में बोला। Yes, you are right. So RNS, I just want to tell you one thing. As far as my memory goes, it is the first time that somebody from Bollywood has recognized that this is the impact of Sushant Singh Rajput. आपको याद आता है इससे पहले कभी भी किसी बॉलीवुड वाले ने ये एक्सेप्ट किया हो कि ये सुशांत के SSR वॉरियर्स का इम्पैक्ट है जो बॉयकॉट हो रही है फिल्म? ये पता नहीं क्या क्या रीजन गिनाते रहते थे, अरे कोरोना लग गया है, लॉकडाउन लग गया है, कोई बात नहीं, OTT पर चल जाएंगी। आप बताइए, इससे पहले किसी ने लिया था इतना खुलकर नाम? एग्जैक्टली तो ये गुड साइन है हमारे लिए कि अब वो झंझोड़ दिया है हमने उन्हें, अब वो मान रहे हैं, दे आर कन्फेसिंग, एडमिटिंग दैट इट इज द इम्पैक्ट ऑफ SSR and SSR warriors that they are being destroyed, devastated. और ये बताऊं मैं आपको, अब ये सुशांत का नाम भी नहीं लेते थे, और लेते भी थे तो उल्टा सीधा बोलते थे उसके बारे में, लेकिन अब इन्होंने बॉयकॉट के लिए किया। अभी मैं बताऊं आपको, उसके बाद ये ट्रेंड चल गया है। ध्रुव राठी का भी एक ट्वीट आया था कि SSR गैंग, एग्जैक्टली SSR गैंग जो बॉयकॉट कर रहा है, उसको यही नहीं पता कि SSR ने पाकिस्तानी का रोल किया था पीके में। उसका ऐसा ट्वीट आया था। उसके बाद उसके इसमें सेक्शन में कमेंट्स देखे थे क्या आप गौरव जी? नहीं, मैंने ज्यादा तो नहीं देखे, लेकिन जो भी करा होगा आप लोगों ने बहुत अच्छा करा होगा। और करिए, वॉट लगाइए, इनको पटकिए, बार बार इनको जूता दिखाइए, और ये आगे से सोचे ऐसा करने से पहले। लेकिन इसमें एक रे ऑफ होप, एक पॉजिटिव साइन ये है कि आप ये बोल तो रहे हैं, मान तो रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का असर है। एक मिनट आर्यन, ये वाली बात जो है, ये पहले मानते ही नहीं थे। ये तो कह रहे थे ये कुछ बेवकूफ लोग हैं, लगे हुए हैं, ये लॉकडाउन की वजह से है, अरे एक छोटा सा फेज है, चला जाएगा। ये एक्सेप्ट करने में भी मक्कारी दिखाते थे। अब इस हालत पे आ गए हैं कि मान रहे हैं। मैं इस पे आप बताइए, सही कह रहा हूँ नहीं? थोड़ा सा कुछ आपके विचार। नहीं, एब्सोल्युटली। एंड वही मैं बोल रही थी कि आपके, आई एम जस्ट एडिंग टू व्हाटएवर यू आर सेइंग कि जब से ये भाई साहब पीपल लाइक दीज गाइज हु आर क्लियरली पेड रिव्यूअर्स आर सेइंग कि stop being in denial about boycott, not affecting film business and everything, and ये लोग जो है रक्षाबंधन का reviews and all that, they have done all these things to show the mirror to all these people कि देखो ये सही में हो रहा है, तेरे मतलब ब्रेन में घुसाने के लिए सब कुछ, all these people are being helpful. Yes, yeah, they were in denial mode. He's right.
they have been in denial mode for a long time. Denial mode. और boycott को लेकर भी और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी denial mode. Only one or two इन्होंने that is true. अब इनको पता लग रहा है कि सुशांत की जो आर्मी है, जिसको एक गैंग बोलते हैं, उन्होंने इनकी खटिया खड़ी कर रखी है. अब इनको समझ में आ रहा है. आप देखिए कुछ दिनों बाद ये बोलेंगे कि वो तो बड़ा अच्छा आदमी था सुशांत सिंह राजपूत, हमें बहुत दुख है. इनके नाटकबाजी में मत आइएगा, ठीक है? ये सारे गुरु घंटाल लोग हैं, ये अपनी पैसा बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए कुछ भी बोलेंगे. इनका भरोसा मत करिएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ. 2.5 साल बाद तो इन्होंने नाम लिया है उसका. आप ये देखिए, क्रेडिट दिया है उसे कि उसका इम्पैक्ट है. समझ में इनको पहले से आ रहा होगा. तो ये कौन सा सीन है? ये दूसरा आदमी कौन है? ये पूरा एवरीथिंग छापाफाई, राइट? कॉपी पेस्ट तो वही हो रहा है यहाँ पे. ओके, कॉपी पेस्ट है ये. सो ये आमिर खान को, वैसे आमिर खान को चाहिए कि इस वाले ग्रह पर चला जाए एक बार, जिससे ये पीके में आया था. वहीं अच्छा लगेगा इसको. और इसकी ऐसी हालत हो जाएगी ना जैसी पीके में थी और जैसी इस लाल सिंह चड्ढा में थी. कौन सी वाली बेटर रहेगी? चलिए जो भी है. I just want to show you something related to what is happening with Naga Chaitanya. If you guys know, Naga Chaitanya is also in the movie. Zero charisma, zero, zero screen presence. There is nothing. Oh, bache mein. Okay, Naga Chaitanya is Nagarjuna's son, and he is also a hero in South India movies. And he, this lady is Shobita Dhulipala. I think this some kind of Miss Universe runner-up or Miss India runner-up or something like that a few years ago. And this lady has been trolled, saying that she's the one who is having an affair with Naga Chaitanya now, or a girlfriend now, or something like that. And wo aake, she's saying ki she's doing all these things to say that, public can say whatever they want to say, and this is what we will do. So this kind of क्या कहना चाह रही है? मैं नागा चैतन्य की गर्लफ्रेंड हूँ, तो मूवी देख लो. हूँ तो क्या कर लोगे, हूँ तो क्या कर लोगे टाइप्स. आई डोंट नो व्हाट. क्या कर लोगे कह रही है. इतनी हिम्मत. एग्जैक्टली है क्या? These are the role models that we have, unfortunately. Miss India, Miss Universe, Miss whatever, जो भी रहते हैं वो लोग. And Naga Chaitanya ka, I'll just come to you to show you what else is happening here. एक second. नहीं, रचना जी, जो हमारी पहले मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स बनी थी, सुष्मिता सेन या ऐश्वर्या राय, इनके कभी ऐसे स्टेटमेंट एरोगेंट नहीं आए. मैंने नहीं देखे. ये जो अब बन रही हैं पिछले 5 साल में, 10 साल में, ये ज्यादा एरोगेंट है. ये तो ज्यादा ही एरोगेंट है, बट ये बहुत ही ज्यादा है. आप देखिए, सुष्मिता सेन फर्स्ट मिस यूनिवर्स थी इंडिया की. उसका मैंने रिसेंट में आ गया हो तो अलग बात है. मैंने उसका कोई एरोगेंट स्टेटमेंट नहीं सुना. उसने पब्लिक को चैलेंज किया हो, ऑडियंस को चैलेंज किया हो. काम उसने भी गड़बड़ झाले वाले किए हैं, वो अलग बात है. तो लेकिन अब जो ये 5-10 साल से बन रही हैं, ये तो ये सोचती है कि हम इनके पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते. ये समझती है सारे कीड़े मकोड़े हैं. चलिए, बस यही कहना चाह रहा हूँ. ऑडियो थोड़ा मेरे को सुनाई नहीं दे रहा. फिर से कुछ नाटक हो रहा है मेरा लाइफ में. Okay, so let's see. This lady again, Shobita Dhulipala, is like hanging out with Amir Khan. Uska, if you see the profile, she's slowly creeping up to North India. Pata nahi usko Bollywood mein kuch chahiye, whatever. But she's an up and coming actress supposedly now. तो देखते हैं क्या क्या होगा अभी. So let's talk a little bit about Miss. सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है. इसको बॉलीवुड में आना है तो ये तलवे चाटने शुरू कर दिए हैं इसने. सीधी सी बात. कुछ ना कुछ करके प्रेजेंस बढ़ाओ अपना, whatever it is. So what happened? क्या नाम क्या था? नाम क्या था इसका? इसका नाम क्या था? उसका नाम है शोभिता धूलिपाला. This lady. शोभिता धूलिपाला. Yeah.
भाई ये, हाँ, इसने जैसे कहते हैं ना बूट लीकिंग शुरू कर दी है, तो बस वही है। अभी क्या कहती है ये, एक ये भी है समंता, ये समंता वही है जिसका डाइवोर्स हो गया था। यस, नागा चैतन्य के साथ डाइवोर्स हो गया था। नागा चैतन्य के साथ, एक बात बताइए, नागा चैतन्य के साथ जिसका डाइवोर्स हो गया और नागा चैतन्य की जो अब गर्लफ्रेंड है, ये दोनों ही नागा चैतन्य के लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है ये दोनों तीनों यूनाइट होने वाले हैं, मतलब एक घर वाली एक ऊपर वाली, ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला? हाँ, क्या कहते हैं उसे? Okay, so एक second, I'll just show you what Samantha is doing these days, because rumors on a girl must be true. Rumors on a boy are planted by the girl. Grow up, guys. Parties involved have clearly moved on. You should move on too. Concentrate on your work. Your families move on. इतने सारे exclamations, मतलब मेरा 4 पेज के essay में भी नहीं होगा, but दीदी के पास इतने सारे exclamations है because she is like trying to see, trying to protect शोभिता धूलिपाला की बेचारी उसको अफेयर का ये कर रहे हैं वो तो। अरे ये तो बहुत मर्सीफुल लेडी है बेचारी, अपनी सो कॉल्ड सौतन के लिए इतनी फिक्रमंद है, तो ये तो हमें सीखना चाहिए इनसे। आई नो। हाँ, एक बात और है, जितने इन्होंने इन्वर्टेड ये क्या एक्सक्लेमेशंस लगाए हैं यहाँ पर, इतने तो इनके बदन पे कपड़े नहीं होते जब ये फोटोशूट कराती हैं समंथा, तो मानना पड़ेगा किसी चीज में तो इन्होंने। So because we are on the topic of Samantha दीदी, एक बार इसका भी देख लेते हैं नाटक आजकल। There is Antava, let's see, यार एक वीडियो रखा था मैंने यहाँ पे, ओके। So this is the introduction video for before Coffee with Karan episode recently. ठंडी मत भड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। So I don't know हिंदी में क्या है। वो गाना है गब्बर फिल्म का, सुन लीजिएगा आप कभी भी, चित्रांगदा सिंह पर फिल्माया गया है। हाँ, आइटम सॉन्ग है उस फिल्म में, गब्बर मूवी में। ओके यार, लास्ट में। हेलो रचना मैम। हेलो रॉकी जी, हाउ आर यू सर? आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। सो क्या है आपका ख्याल, व्हाट इज हैपनिंग? ख्याल तो जबरदस्त है मैम। पहले तो ये गौरव गुप्ता जी को नमस्ते कर लूं, मैं उनका फैन हो गया हूं। गौरव सर, बिल्कुल आप हमारे योद्धा हैं, मतलब सेनापति हैं आप हमारे एक तरह से। रचना मैम तो और आगे चल रही हैं, तो हमारे आगे रचना मैम तो क्वीन है, क्वीन है। नहीं वो टॉपिक, ओके, टॉपिक आप पे रखते हैं। चलिए नेक्स्ट। रचना मैडम क्वीन है, साम्राज्ञी जिसे कहते हैं ना। नहीं थैंक यू। रानी नहीं, साम्राज्ञी। बिल्कुल मैम, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि मतलब बॉलीवुड ऐसा है ना, इट हैज बिकम अ फ्यूजन ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट हिंदुइज्म एंड सनातन धर्म, जिसको हम लोग बहुत प्राउडली ओन करते हैं। और सिर्फ यही नहीं है, इफ आई कैन नैरो इट डाउन टू अ डेफिनेशन, इट इज एन अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग दैट इज अगेंस्ट सनातन धर्म। मतलब मेरा ये आपसे एक भोला भाला क्वेश्चन है, मतलब जितना मेरे को समझ में आता है कि जितने भी हिंदू नेम वाले एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, when did you see them praying in a sanatani way last? कब आपने देखा था इनको कि कोई पूजा पाठ में किसी मंदिर में गए हों और वहाँ पापराजी स्पॉट कर लिया गया हो? सो क्या हम माने कि ये इन्होंने बस नाम के ही हैं? क्योंकि मेरे को तो कोई दिखता नहीं इनके कैरेक्टर। ये कहाँ जाएंगे सर? ये तो कहते हैं कि आप दूध कहाँ चढ़ाते हो और दूध कहाँ देना है आपको, ये जाएंगे। अब ये सामने ही है आपके, ये भाईजान। अरे अभी तो लाइव स्ट्रीम है, नहीं तो मैं अच्छी बातें करता इनके बारे में। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब भी मूवी रिलीज होती है तो उसके पहले ये कहीं पे चादर चढ़ाने जाते हैं। किसी को मालूम है कहाँ चादर चढ़ाने जाते हैं ये?
जैसे आप चादर सर्च कर चढ़ाने तो लीजिए वहीं जाते हैं जो टाइगर। मज़ारें होती हैं, नहीं जाते हैं जो मुस्लिम्स की मज़ारें होती हैं, सूफियों की मज़ारें, बिल्कुल वहीं तो जाते हैं। बिल्कुल, ये तो इनका कैरेक्टर दिखता है ओपन में इस तरह से। ये आई मीन दे आर मतलब दे हैव इनटू देम एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट हिंदुइज्म, और वो चाहे वो तापसी पन्नू हो या तापसी अनुराग। पन्नू हो, स्वरा भास्कर हो, ऋचा चड्ढा हो, सोनम कपूर हो, सर यू नेम इट, कितने नाम चाहिए आपको, बताइए मुझे। हैं लाइन से ही है। हीरोइंस के चाहिए तो हीरोइंस के बताऊं, हीरोज के चाहिए तो हीरोज के बताऊं। नहीं सभी हैं उसमें। मैं आप पता है आप इसमें आप स्मार्ट नहीं बन सकते। मैं चैलेंज आपको दूं। चैलेंज ये है कि बताइए कौन सा प्रो हिंदू है, कौन सा प्रो सनातनी है। ये आपका चैलेंज है। यस, आई एक्सेप्ट, इट्स अ चैलेंज। ठीक और है, यू आर राइट। रचना मैम, मेरी एक ऑब्जर्वेशन और है। ये मतलब दे हैव ऐसा नहीं है कि दे हैव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन देम बेसिकली। तो हॉलीवुड की तरह बनना चाहते हैं और फिर ये अपने अपने आप को हॉलीवुड से नीचे समझते हैं, और जो इंडियंस हैं, एक जनरल पब्लिक है, इससे ऊपर समझते हैं। Yeah. इसीलिए दे काइंड ऑफ एवरी टाइम दे पेट्रनाइज, दे डोंट lose an opportunity to patronize the common Indians, common Hindu population in the country। जैसे चाहे वो फेस्टिवल्स के माध्यम से हो, चाहे वो जो दहेज प्रथा है, दैट इज आई मीन लॉन्ग गॉन। नाउ द दहेज प्रथा इज इन रिवर्सल। द दहेज लॉज आप देखेंगे दैट आर बीइंग मिसयूज टू अ लेवल की अब उधर दूसरे साइड से नाउ मेन आर शाउटिंग कि नहीं वेयर आर आवर राइट्स। लेकिन अभी भी रक्षाबंधन में दहेज में जो किलिंग हुई उसके बारे में ये बोलना अभी भी बोल रहे हैं। तो ये पेट्रोनाइज करने का जो इनकी आदत है ना, जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि नहीं, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, आई विल टेल यू हाउ टू डू, ये वाली चीज आपको आई विल टेल यू। आई हैव रिसेंटली सीन अ वीडियो ऑफ सुष्मिता सेन Yeah. where she is saying she was molested in an award function where a 15-year-old boy Yeah. grabbed her from back, and then she kind of pulled her from the back and then put it into her that armpit area, and then told him not to do again or else he will be ruined for life। मेरे को एक चीज पूछनी है, ये कहाँ इंसिडेंट हुआ था, ये थोड़ा बताएंगे हमारे को। और ये जब सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, मैम, दे हैव देयर सिक्योरिटी, 4-5 मुस्टंडे आसपास होते हैं। Yeah. कौन सा लड़का घुसा इनके पास, और जो लड़का घुसा होगा इनकी ही फ्रेटर्निटी कहीं का होगा। आपको लगता है अ कॉमन बॉय कैन रीच देयर? And और common, ये so even, let's say for example, even if that story is true, Rocky G, you know what I'm thinking when I was listening to that YouTube shorts, तेरा ही influence है जिसकी वजह से वो बच्चा could even dare to think that a woman is an object that you can handle or mishandle, right? तेरा ही जो lessons है when you are dating a 20-year-old boy toy, when you are doing whatever nakhre you're doing in Dilbar, and all those movies. What do you think? How do you think we have been learning? You are the ones who is whatever you're saying about being sanskari or anything like that, right? No, I have not learned anything about my sanskar from you. I've only learned this bullshit from you, right? I So was coming to that, ma'am. I was coming to that. So first of all, let me demolish this fake thing. I'll tell you how fake these people are. एक स्टोरी बनाई just to show her in good light that she is, how ferocious she is. कितनी मतलब एक women's cause के हाँ, लिए कितना ये देखिए ये देखिए बेशर्मी। इससे क्या सीखेगा 14 साल का, 15 साल का, 12 साल का बच्चा। यू आर blatantly objectifying yourself. You, Bipasha Basu, you are selling yourself as an object and making mullahs. So what do you expect from a 14-year-old boy when he sees you and comes near you? What will he think? He will think of respecting you. एक second, sorry, let's Rocky जी finish. I was just like playing some pictures. We'll talk about them. बहुत कुछ है बात करने। Yes, ma'am. आपकी Yes, ma'am. इज्जत करने की सोचेगा। अरे एक मिनट, आपकी इज्जत करने की सोचेगा। सारी इज्जत तो आपने इसमें उतार रखी है अपनी, वो कहां से आपकी इज्जत करेगा? अरे कोई मैम है, बोलने दो गौरव।
Yeah. Hi, मैम आई Rachana. हैं. Just wanted to say hi. Nice to see you. And was a quick one last time, but Yeah. after a long time, it's good to see you. And I like always, see all these live. Is always I'm always boycotting Bollywood because since I'm in the Soshan movement, so I kind of don't want to see any movies because all the movies are taking away from him. So that's all I have to say. We have to keep boycotting and for Sushan. Thank you so much, Rachana. Thank you so much, Anand. Thank you, ma'am. Thank you. Sorry, Okay. Rocky. Yeah. Yes. No, ma'am. It was. I mean, I love listening to others' opinion. Also, I also learn. So, ma'am, मैं ये बोलना चाह रहा था कि I was coming to that. So let me demolish this, fake theory of putting you in putting oneself at a higher pedestal. That how ferocious and how moral she is and how brave she is, and yet she is so forgiving. मतलब सर्वगुण संपन्न जिसको हिंदी में कहते हैं ना कि उन सब चीज उनमें है. आ हा वाह. No. तो क्या the thing I was trying to say, first of all, I'll tell you, they have security guards. जो आपके ऑडियंस सुन रहे हैं, let me explain to them also. कभी आप whenever if you have spotted any celebrity, उनके आसपास कम से कम 3-4 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं who won't I mean let you go near to that celebrity. Yeah. और अगर वो सेलिब्रिटी कहता है कि नहीं, ओके आई कम हियर, आई गिव यू ऑटोग्राफ और आई क्लिक अ सेल्फी विथ यू, तो फिर सिक्योरिटी वाले अलाउ करते हैं. So this is absolutely bullshit ki she is going without security and some random boy from some crowd comes and molests her. That does not seem true, first of all. Secondly, let's say ऐसा कुछ हुआ भी है तो आप बहुत ब्रेव हैं, आपने ये चीज़ को you made sure that a modesty of woman is protected, right? So I mean, why you didn't speak when modesty of so many women were, damaged in the Bollywood? There are so many actresses जिनके बारे में casting couch के बारे में. There is a wonderful actress by the name Rachel White. She's a model based out of Calcutta. No, I mean very few people knows about her, but she actually Sajid Khan के बारे में she had alleged something a lot actually. So अब देखिए उसके बारे में तो कुछ नहीं बोला सुष्मिता सेन ने. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रग पार्टीज के बारे में आया तो बहुत, आप सोशल वर्कर भी हैं तो आपको बोलना चाहिए था उसके बारे में भी. फराह खान की जो स्टेटमेंट थी, नॉट फराह खान, सरोज खान के बारे में जो सरोज खान की जो स्टेटमेंट थी कि बॉलीवुड अगर डैश डैश करती है तो क्या हुआ, पैसे भी तो देती है. तो इसके अगेंस्ट में क्यों नहीं सुष्मिता सेन ने बोला? आई मीन देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स रचना जी, एंड एक के बारे में भी नहीं बोला. हम अगर काउंट करने बैठे तो अभी मतलब सुबह से लेके शाम हो जाएगी एंड विल नॉट एंड. दिस लिस्ट इज सो बिग एक्चुअली. और मैडम ने एक भी नहीं बोला. आई गिव यू सेकेंड इंस्टेंस. एक बार क्या हुआ, अक्षय कुमार जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा बोला कि उन पे किसी ने पूछा था कि सम इवेंट हैड हैपेंड समवेयर जहाँ पे ये महानुभाव गए थे और उनकी सिक्योरिटी ने उनको धक्कम धुक्की कर दिया. मतलब जो फैंस थे दे वर बीटन अप बाय द सिक्योरिटी, दे वर असॉल्टेड बाय द सिक्योरिटी. इस पे कॉमन लोगों ने ये पूछा अक्षय कुमार से या प्रेस रिपोर्टर ने कि ऐसा क्यों किया आपने, जो आपके फैंस हैं आपके पास जाना चाहते हैं, फोटोज क्लिक कराना चाहते हैं और आपने उनको असॉल्ट करवा दिया, हाउ रूड दिस इज. तो उस पर अक्षय कुमार ने जवाब दिया कि ऐसी कई बार चीज़ें सिक्योरिटी को करनी पड़ती हैं. बिकॉज एक बार क्या हुआ था कि आई शुक हैंड विथ वन ऑफ माई फैन एंड उसके हाथ में ब्लेड था एंड एक्चुअली दैट एंडेड अप कटिंग माई हैंड. तो आपको लगता है कि एक खरोंच भी इन बॉलीवुड वालों को आएगी और न्यूज़ नहीं बनेगी और पूरा हाथ उनका कट गया? ये कहाँ की न्यूज़ है सर? किसने किया ऐसे? आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे. जस्ट टू जस्टिफाई I mean some of your act, Yeah. you are putting up fake stories, absolutely vilifying other people. Yeah, commoners. Yeah, and his fans, that too. Yeah, तो मैं बोल रहा हूँ I could be wrong, I don't know, I could be wrong, बट प्लीज हमारे को बताइए कि वो सिक्योरिटी आपकी तब कहाँ थी और वो कौन सी इंसिडेंट है. यू हैव सम प्रूफ कि आपका हाथ कट गया था और लोगों ने देखा था. आई डोंट बिलीव दीज पीपल एनी मोर. दैट्स द प्रॉब्लम मैम. दीज पीपल हैव गॉट ट्रस्ट इश्यूज नाउ.
That दे point आर about नो मोर। हाँ, बोलिए बोलिए। No, I just have one thing. That point about you saying कि Sushmita should have stood up for people like Rachel White. I don't know about her story, but I'm just saying कि that is brilliant because yeah, if you are standing up for your rights, you're so courageous, you're so amazing. तेरा PR इतना अच्छा काम कर रहा है कि showcasing that at an interview and all that shit. So first point is how did that person get into your inner circle of bodyguards and everything to your point, and then the second thing is why didn't you stand up for other women if you're so courageous and so honest and so this thing about your own yeah, so it's just great points there, Rocky ji. Yeah, sorry Garuji, yeah please. हाँ, पहले ये लोग, ऐसा होता है जो स्टोरीज ये लोग सुनाते हैं, पहले हमारी अलग स्टेट ऑफ माइंड थी। हम बिलीव कर लेते थे कि सुष्मिता सेन ने बोला है तो वो सच्ची बोल रही होंगी, हुआ होगा ऐसा कुछ। लेकिन पीछे 2 सालों में, 2.5 सालों में जो रेवोल्यूशन आया है, उसके बाद हमें पता लगा है कि ये लोग बेसिर पैर की कुछ भी कहानी बना देते हैं जो देखने में ही बेसिर पैर की होती है। एट द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन, प्राइमा फेसी, फॉरगेट अबाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, प्राइमा फेसी वो डाउटफुल होती है। 15 साल का बच्चा आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर आप कह रही है मेरी कमर में उसने हाथ डाल लिया। व्हाट द बुलशिट यू आर टॉकिंग अबाउट। एक बात बोलूं गौरव जी, एक बात बोलूं, जी। ये साले हॉलीवुड और अमेरिका के नशे में इतने चूर हैं, अपने आप को वहीं का समझते हैं। आप जाके देखिए वो 1994 एक तो पहले ये जब किसी अमेरिकन टॉक शो में जाते हैं बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह बैठे होते हैं, जैसे सामने मालिक बैठा है इनका, ठीक है। और इसके बाद देखिए इनकी एक्सेंट कैसे चेंज होती है। दे आई मीन द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज सो मच, रचना मैम, यू कैन सी दैट ड्रिपिंग ऑफ देयर फेस। इतनी ज़्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। अब एक वो बेसिक इंस्टिंक्ट की एक वो एक्ट्रेस थी ना, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, शी वाज वेरी पॉपुलर, सो Yeah, Sharon Stone. yeah. So the way Sharon Stone used to talk, I mean I could be wrong, but I saw Sushmita Sen exactly copying her in 90s, and Sharon Stone was a sensation back in 90s. तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये लोग इतना ज़्यादा अपनी मतलब अपने आप को गिरा चुके हैं कि कैसे भी भाई मेरे को वैसा बनना है जैसा कि ये लोग हॉलीवुड वाले लोग हैं। एंड एग्जैक्टली दे हैव कॉपीड द ड्रग कल्चर, द रेव पार्टीज, दे जस्ट हेट इंडिया एंड हिंद। तो क्यों नहीं चले जाते हो यार, यहाँ छोड़ दो, यहाँ पे पॉपुलैरिटी लेके वहाँ का कल्चर क्यों प्रमोट करते हो। एंड एवरेज अमेरिकन डोंट, आई मीन हॉलीवुड से एवरेज अमेरिकन भी शायद अलग है। तो मैं ये बोल रहा था गौरव जी, मैं सॉरी आपकी बात काटी, कि ये जो 14-15 साल वाली बात जो है ना, ये 14-15 साल वाली बात जो 15 साल में बच्चे जवान हो जाते हैं, ये अमेरिका में बहुत बार सुना है मैंने। कई पॉर्न स्टार के इंटरव्यूज हैं, वीडियोज हैं कि यू नो आई ब्रोक माई वी एट द एज ऑफ 14-15। सो ये वही वाला माइंडसेट आ रहा है कि 15 साल में ऐसा हो जाता है। 15 साल में मैं बोल रहा हूँ कि that is there in life, that is the problem. Yeah, राइट मैम। सो आप देखिए इंडिया में 14-15 साल में आई थिंक स्टिल मेजॉरिटी ऑफ बच्चे don't think that way, though these Bollywood वालाज are trying very hard, but still somehow 14-15 age group में वो जो बच्चे हैं, majority of them, I would say 90% of them are not falling prey to these bhands actually. And I would also say कि जो 90% of more than 90%, 95% of the women हैं young age unmarried, they are also following brahmacharya before marriage. So I actually I fight with my friends that don't degrade the dignity of when marriages used to, उनके मैरिज प्रपोजल होते थे तो दे यूज टू थिंक लाइक दैट ना कि यार पता नहीं बॉलीवुड का इतना सारा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। सो आई एक्चुअली इनकरेज देम एंड से कि नहीं यार, गो मीट द पर्सन एंड चेक दैट आउट दैट हाउ द पर्सन इज। आई स्टिल बिलीव मैम, मैंने जितना देखा 90-95% ऑफ यूथ इज स्टिल, एंड अब तो ज्यादा हो रहा है नाउ, यूथ इज द यूथ हैज टर्न टोटली इन फेवर ऑफ सनातन धर्म, दे आर फॉलोइंग मोर, वो ज्यादा हिंदुइज्म ओरिएंटेड होते जा रहे हैं। दैट इज माई ऑब्जर्वेशन। जी गौरव जी आप बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि ये एक तरह से देखा जाए तो एक कॉन्स्पिरेसी है, एक प्रोपोगेंडा भी है ना, इंडिया को डिफेम करने का, इंडिया के बच्चों को डिफेम करने का, कि इंडिया के बच्चे ऐसे होते हैं। आप इस चीज को भी समझिए।
बिल्कुल है ना, 14-15 साल का कोई बच्चा है और वो वहां जाके ये कर रहा है, वो कर रहा है, और पूरी सिक्योरिटी को ब्रीच करके वो करता रहा तुम्हारे साथ, तुम्हारे सिक्योरिटी वाले ने उसे उठाकर बाहर नहीं फेंका, कोई कहीं शोर नहीं मचा, कोई कहीं हलचल नहीं हुई, एक रैंडम डे पर आपने आकर कह दिया कि 1 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो हम भी थोड़ा अपनी गलती माननी पड़ेगी। हम नहीं वो ब्लाइंडली तो बिलीव करते थे, ठीक है, अगर कोई ब्लाइंडली प्रोड्यूसर बिलीव करता करते ना, थे। अगर कोई प्रोड्यूसर करता तो समझ में आता, अगर कोई डायरेक्टर करता, कोई एक्टर करता तो समझ में आता, लेकिन कोई आम बच्चा ये कर पाया और सिक्योरिटी वालों ने नहीं पकड़ा उस बच्चे को, माताजी ने पकड़ लिया। हाँ तो मैं, आप इस बात को भी तो मानिए कि हम ब्लाइंडली बिलीव करते थे इनके ऊपर। हमने जब पहले आया था तो हमने यही सोचा था ना कि सुष्मिता सेन जी, देवी जी कह रही हैं तो सच ही कह रही होंगी, यही उस समय हमारे मन में आया था ना, 4 साल पहले, 5 साल पहले। इस बात को भी तो कन्फेस करिए ना, ये तो अब हम कह रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल आई There एग्री। is there's a lot of things. Yeah, there are a lot of things to that story. And now, as you guys said, we are actually asking questions. पहले तो बस सुष्मिता सेन है, मिस यूनिवर्स है, तो बस बोल दिया. But now we are like थोड़ा हमारा भी, we are thought which is democratic, we are using it. So And it's, Rachna ma'am, let me ask you a question. Since you are a woman, you could think in that direction. yeah. मेरे को कुछ फेमिनिस्ट ओरिएंटेड लड़कियां हैं, वो ये बोलती हैं कि 14 अफेयर्स करे, 15 अफेयर्स करे, व्हाई डू यू जज अ वुमन? आई एम नॉट जजिंग अ वुमन, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, is it good to have 12, 15, 20 partners? I mean, I'm just curious to know, and Psychologically, so has it any negative impact on a woman's psychology? No, I'll tell you. See, we can have an elaborate, separate discussion on that, because that is also an important facet of what we are going through right now. इस पर तो इस पर सेपरेट डिस्कशन रखना होगा, एक सेपरेट सेशन। नहीं, because you में don't have the self confidence, or you lack the self dignity, you are worth something, you can preserve yourself for the right person or the right partner in the future and all that. So that comes into we can go into that psychology aspect and think see, cultural brainwashing. If you are woke, if you are a feminist, if you label yourself as feminist, you're supposed to be like living out life loud and do whatever the heck you want. Just being a woman will not stop you. Like, so many definitions that have been put by the society, right? So unfortunately, a lot of girls and boys, for that matter, are falling trap for all these things. And अनुज जी को बस विपाशा बासु का वो फोटो अच्छा लग रहा था, तो he doesn't let's focus. I'm just joking on you, Anuj ji, you know me. Deepak Prakash ji, wow, no wonder you guys have such less live viewers. So Deepak ji, so right now we are 27 viewers, sir, including I think me, who is conducting. So आपको लेके 20, आपको निकाल के 25 viewers हुए. Okay, happy? So let's do this. I just want to show this to Deepak Prakash ji. Hopefully he'll get excited about what kind of advertisements we used to have in our childhood. Second. Garoji, I'll give you a chance to talk just 1 second. I just saw this and I was really shocked to see this. ये guess कीजिए कौन सा advertisement है before this ends in 20 seconds, okay? So just think about it. जब मैं छोटा लड़का था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती, जब रोशन होता बाजार, रोशनी की दुनिया का सरताज बजा। What the bullshit? मैं कब का एड है मैम ये? When was this? I mean, when was it telecast? I mean, I have no idea, sir. Silk Smita looks like she's 30, 35 years old or some shit like that. Maybe 30 साल होगा वो ad बन के. But I think it's ma'am, I don't think it's an original video. Not sure. I mean, they may have mixed it. They may have edited. It's a doctored video, I think. It's from a movie scene, and then it maybe they have put it somewhat. इनका बजाज और बजाज नहीं रोशन हो गया, ऐसा कैसे हो गया भाई? Quick point, Rachna ma'am, if you allow.
Yeah, please. मैम व्हेन आई वाज अ किड एंड आपने भी देखा होगा कि वी यूज्ड टू हैव एडवर्टाइजमेंट्स जहाँ पे लेडीज एक्चुअली वोर साड़ीज. Yeah. So and that was across all like वो निर्मा सुपर आइए आइए दीपिका जी. So that was the one, and that Dhara ad was the jalebi wala ad. Then I think one advertisement had that lady with that long frock, but that also looked very decent. That Cadbury ad. But now you have, I mean, all women wear Western dresses like one piece kind of with a split side split जो होता है वो एक Western Exactly. outfit. So that is at least the bare minimum. नहीं वो यार अभी if I pick up the topic, the problem is मेरा personal choice है, मुझे जो पहनना है पहन, मैं कुछ पहनूंगी नहीं पहनूं, मेरे कुछ तेरे को क्या मतलब वो सब मतलब दिमाग का दही कर देंगे यार पब्लिक मैम मतलब. एक्चुअली में दिमाग एक मिनट दिमाग का दही कर देंगे. देखिए पर्सनल चॉइस उनकी है तो पर्सनल चॉइस हमारी भी है ना. बहुत बढ़िया, हम मैं यही तो बोलने अपने वाला व्यूज था. एक्सप्रेस करेंगे ना. आप एक बात बताइए, आप 2 पीस बिकनी में टूथपेस्ट बेचने आई हैं, ठीक है. हमें तो डाउट हो रहा है कि आप टूथपेस्ट बेचने आई हैं या क्या बेचने आई हैं. कि बिकिनी हैं? बेचने आई. नहीं बिकनी बेचने आई हैं या बिकनी के अंदर जो है उसे बेचने आई हैं. मेरा तो मतलब तो हमें भी अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का राइट होना चाहिए. आपकी पर्सनल चॉइस है, हमारी भी पर्सनल चॉइस है. एक मेरे को वो लौंडा मिल गया, वो ये बोलने लगा. एक एड इस तरह मान लीजिए कि एड इस तरह आता है. एक बिकनी पहनकर लेडी कार के पास खड़ी है और नीचे लिखा आ रहा है ट्राई दिस वंस. अब बताइए किसे ट्राई करें. क्लियर हो रहा है वहां पर किसको ट्राई करना है वंस. That's a very good. Unfortunately, that is the state of affairs. And ये भाई साहब यहाँ पे करण जौहर लिखते हैं ये ऐसे वाले फोटोज डाल के. अच्छा हम ये सब बोले, हम मिसोजिनिस्ट, हम वुमेन हेटर, हम पेट्रियार्कल. तुम फेमिनिस्ट हो, तुम्हारी पर्सनल चॉइस, तुम्हारी मर्जी. हम अपने ऊपर कपड़ा बांध लें, आंखें अपनी फोड़ लें कि हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं. अरे भाई सबकी चॉइस होनी चाहिए ना. ये मैं एक ऐसे ही एक वो लौंडे से बात कर रहा था, वो मुझे बोलने लगा कि तुम्हारी नहीं इच्छा मत देखो. तो मैं उसको कहने लगा यही सेम चीज कहा कि तुम्हारी इच्छा नहीं है मत सुनो, मैं तो बोलूंगा ना. बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड. हम तो बोलेंगे, तुम दिखाओ, हम देखेंगे और बोलेंगे. एक रणवीर सिंह वाले पॉइंट पे रचना मैम, मैंने एक और लाइव स्ट्रीम में ये चीज बोली थी कि जहाँ पे ये चीज बात चल रही थी कि was it good, was it bad. So I told him that told the admin of that live stream that कि पहले as per the human history evolution, मतलब पहले we were walking just like that, there was no clothes, nothing. So then we wrapped leaves around us, and then slowly we started getting cotton and then started weaving clothes. So then we started wearing clothes. Then we started wearing more expensive clothes. Then we started wearing more and more and more expensive clothes. And now suddenly we have decided that we are not going to wear any clothes. So are we going to complete that full circle? So अभी जितने लोग इवोल्यूशन में थे, जो लोग उस इवोल्यूशन विटनेस किए थे, वो लोग तो सर पीट रहे होंगे ना कि when you had to be in the same state, why the hell did we think about wearing anything? One second. Okay, I just wanted to show you कि कपड़े नहीं पहनने से मुझे ये भाई साहब याद आ गया था. So I just wanted to show you. Sorry, I just have a lot of content. I just wanted to cover. I'm just going to keep interrupting you and try to do this. तो here यहाँ पे भाई साहब बेच रहे हैं कुछ cologne या I don't know what he is trying to sell. For the first time, I saw his shaved armpits, and I have to admit, his hairy pits are very sexy. People are so desperate. Okay, ठीक है. अरे तो आपने नाम क्यों छुपा दिए. हमें भी तो देखने देते कितने विद्वान लोग हैं, कौन कौन है ये लोग. नाम तो दिखाइए. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ. तेजस्वी, बहुत ज्यादा तेजस्वी. Sorry, एक second, I can't see the comments. Yeah, I'm really sorry, I can't see any comments. And also, okay. वैसे भी okay. So Judy, I think the person who came was talking about 24 viewers. Because we are doing this live, it seems they're very viewers. So he congratulated us and left. So
पता नहीं उसका लाइफ में क्या प्रॉब्लम था, but okay, so absolutely he shouldn't shave it, and the smell of his spits must be musky. No, I am feeling like puking right now, Rachna ma'am. और जिसने लिखा है ना उसको और अच्छी स्मेल चाहिए ना, तो उसके पीछे चले जाए और अच्छी स्मेल आ जाए। छी 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 छी, राम 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 राम। ओके, सो आजकल ये भाई साहब का एयरपोर्ट लुक ये है, बट पब्लिक बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। बोलिए क्यों? फुल कपड़े राइट। मतलब ये कौन है? बिकॉज उनको तो मतलब किसी और तरीके से, बट व्हाट इज कमिंग अप इज माइलस्टोन फॉर हिम गाइस। August 22nd को over the 1 second, there is some kind of feedback noise. Let me, is that you? Yeah, there's a little bit of feedback there. फिर से मेरा ही होगा, I don't know if that's my audio problem or what. There you go. I hope Peace and Trust has got it. He is fully covered, so that's why पहचाना नहीं किसी ने. But August 22nd को Mumbai police has asked him to come show up. So let's see. Yeah, ये हो गया. Okay, so just wanted to show you guys that a lot of supposedly foreign handles, Twitter handles, blue tick handles that are actually saying Indian action epic RRR, okay, is gleefully over the top as anything I've seen in quite some time. Fascinating to read how it was made and how it has made all its way to America. Okay, New York Times का आर्टिकल कोट करते हुए, मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स हैज आल्सो पिक्ड अप आरआरआर मूवी एंड हाउ ग्रेट एंड ऑसम इट इज. कैन यू इमेजिन दैट? मतलब कुछ भी. Can I make an input, ma'am? Yes. So what I think is, ma'am, don't take me wrong, but I think we should, dump these opinions first, any opinion first of all, into the dustbin, because they are so left-leaning nowadays, and we don't want. We have some self-respect in us, and we don't want. We are something on ourselves, and not we don't want approval of others. But I'm still happy with NY Times reporting this, because to hear the praise from an opposite mindset, or to hear praise from an left-leaning mindset that is basically inimical to the idea of India, so it feels good. बट मेरे को सब डॉक्टर लग रहा है यार. ये आरआरआर मूवी इतना कुछ, मतलब पता नहीं, इतना कुछ खास. I don't know. I haven't watched it. I'm not planning to watch it because of Nepo kids and all that bullshit in that movie. But I'm just surprised कि बहुत कुछ नाटक चल रहा है. पूरा foreign public आके movies का review and all that just looks a little shady. Rachna ma'am, please call Sanjay Nevar on your show. He has a lot of inputs. और उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, तो आई थिंक ही इज बैंग ऑन, एंड आई फुली सपोर्ट हिम. कि लोग ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड वाले सुधर जाएं, बॉलीवुड वाले जो हैं वो इस तरह काम करते हैं, नहीं सुधरेंगे ये. दैट्स इम्पॉसिबल. आज नमूना हमने देख लिया ना. Is this the Gems of Bollywood guy? Is it the Gems of Bollywood? Yes, absolutely, yes. Yeah. Okay. Absolutely. So clarity है, इतनी precision है उनकी thoughts में. मतलब I am just fascinated by the way he speaks, and with that much of conviction. It's absolutely fascinating. और प्रियंका, I've been trying to message him and that lady who runs the thing last week. Sharma. Yeah. I was trying to, but unfortunately, they are not able to respond. I don't know if they're busy or whatever. Yeah, they may be, and they are a little skeptical also going to certain platforms. They want to be absolutely sure, because they have made so many enemies. And Sanjay, you rightly said that this is just a facade. There are a lot of things that are going under the hood. So I'm just quoting him. Right. Also about Priyanka Singh, ma'am, the sister of late Sushant Singh Rajput, she also summarized the issue in a very beautiful way. That let's dump this entertainment, any kind of entertainment, for some time. Let's rebuild our society, rebuild our family, learn something new, go do gardening, learn some skill, find enjoyment in that, so that everything. We are in fact we are skeptical about everything nowadays. Abhi iske bare mein we trust, and the next day it turns out to be something different. So just giving the example I'm giving. Yeah, like Hrithik Roshan
tweeted in favor of that. Is, I mean, that is expected, but anyway, I'm just saying that even we are skeptical nowadays. So she said brilliantly that we should somehow leave Exactly. entertainment for And some time and yeah, go to and if you build see that, ourselves. rebuild ourselves, absolutely, and rebuild our communities, rebuild our societies, rebuild our culture. So many things to do. Absolutely, sir. Okay, I just agree with you. And one last thing, ma'am, and I'll leave the live stream. I just wanted Yes. to make this point that look, I mean, you start going back to history as much as you can. I'm not stopping you to go beyond 200 years British rule or to Mughal rule or to Turkish rule or beyond that also. We have seen a downfall there also. Otherwise, we would have defended, you know, our holy land. But since there has been a downfall, as long as we can see or remember, Yeah. there has been absolutely no attempt to resurrection of Hindu civilization or the civilization that we call today as India. There has been no attempt to resurrect the civilization. Leave aside the actual resurrection. So you call it renaissance, you call it resurrection. We are in desperate need of that. So this is Yeah. the time, ma'am, I tell my friends and family members that this is the time we should unite और ऐसे काम करना चाहिए जहाँ पे एक पुनरुत्थान हो हमारी संस्कृति का और संस्कृति में सभी लोग आ सकते हैं हमारी सभ्यता का पुनरुत्थान होना चाहिए जिस तरह हम सोचते थे हम रहते थे हमको पास्ट में जाके देखना पड़ेगा कि हाउ वी हैव बीन और क्या कारण से वी आर एट दिस स्टेज बिकॉज ये वेस्टर्न मॉडल जो है ना मैम दिस हैज बीन फ्लॉप्ड आई एम सॉरी टू से दिस कि वेस्टर्न मॉडल में ये है कि द मोर वेल्थ यू हैव द हैप्पियर यू आर Yeah, yeah. this But this Eastern actually philosophy has always said ki, happiness is from within, right? So unfortunately, we have lost that, and we have and that can be restored we accumulating. have to work in that regard so thank you Rasna ma'am for your time गौरव भाई ऐसे एक ही मिनट आप सर, एक मिनट सुनिए मेरी बात, जी एक मिनट, मैं आपको जी एक जी बात बताना बताइए चाहूंगा। नहीं मैं बैक हिंदुओं से की भी और सुन सकता हूँ आप बोलिए बोलिए हिंदुओं की और सनातनियों की प्रॉब्लम, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपना इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा। अपना जो उनका ग्लोरियस पास्ट है, जो गोल्डन पास्ट है, उसके बारे में उन्हें अच्छी तरह पता नहीं है। इतिहास दूसरी बोध बात, नहीं है जी उसके बाद जो उन्होंने गलतियां की, कुछ वहां पर गलतियां भी हुई, इंसानी थे वो लोग भी, उन गलतियों का पता नहीं। तीसरी बात ये कि उनको ये नहीं पता कि हमें एकजुट होकर कैसे रहना है और क्यों रहना है। और चौथी बात, शत्रुबोध का एहसास नहीं है। बिल्कुल लेकिन शत्रुबोध का एहसास नहीं है। इन सब के बीच में गौरव जी ऐसा है कि हमारे को अपनी संस्कृति सभ्यता को उजागर करने की जरूरत है जहाँ पे एक शिखा वाला धोती पहने कोई व्यक्ति का आज उपहास पात्र बनता है जहाँ वहाँ हम उसको देखकर सम्मानित महसूस करें कि ये व्यक्ति जो है हमारी संस्कृति का एक प्रतिबिंब है। एक पूरा इकोसिस्टम है जिसे पंचमक्कार और चंडाल चौकड़ी कहा जाता है, उसकी डिटेल्स मैं आपको फिर कभी दे दूंगा। वो पूरा इकोसिस्टम सिस्टमैटिक तरीके से सनातन और हिंदू धर्म के पीछे पड़ा हुआ है जी। उसमें मीडिया भी आती है, उसमें गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस भी आते हैं, उसमें बॉलीवुड भी आता है, उसमें आपके कम्युनिस्ट, फेमिनिस्ट, जिहादीज, आपके सेक्युलर लोग और जितने भी ये आपके देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, ये सारा एक पूरा गैंग, एक पूरा चंडाल चौकड़ी, एक पूरा इकोसिस्टम, साफ भाषा में कहूं तो बड़े सिस्टमैटिक वे में वो काम करता आ रहा है पिछले कई सालों से। जी अब बिल्कुल। हिंदुओं की कुछ चेतना जागी है। हिंदू सो रहा था काफी टाइम से, आपको एडमिट करना पड़ेगा। नहीं वो सोने तो का है, मतलब ये है कि उसे अपने जो ग्लोरियस पास्ट है ना, उसका बोध, जो मैंने अभी रिपीट करा वही चीज, उसे इन चीजों का बोध नहीं था। वो जी रहा था कि जैसे हम कहते हैं ना कि सब धर्म समान है, सब अच्छी बातें करते हैं। उसे यही नहीं पता कि उसका धर्म जितना श्रेष्ठ है सनातन धर्म। मैं हिंदू धर्म नहीं कहता जी मैं सनातन की बात करता हूँ। सनातन सर्वश्रेष्ठ है। सनातन ही एक ऐसा वटवृक्ष है जिसके नीचे हिंदू भी रह सकता है, मुस्लिम भी रह सकता है, सिख भी रह सकता है, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, सब मिलजुल कर रह सकते हैं। ये सनातन के नीचे ही मुमकिन है। मुझे बताइए कौन से इस्लामिक देश में सब धर्म के लोग मिलकर रह रहे हैं? जी तो यही है बस अभी रोटी पानी के इशू में थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन अब चलिए देर आए दुरुस्त आए और जिस तरह से बॉलीवुड का बॉयकॉट हो रहा है रचना मैम आई थिंक वी शुड कीप इट अप एंड एज आई सेड लास्ट टाइम
please come more often. We need warriors like you, ma'am, to come Thank and you so encourage much. us. We are all बिल्कुल। together. और ना Us- अपने को सेकुलर बोलना बंद कर दीजिए। नहीं नहीं, सेक्युलर की बात ही नहीं है। सेकुलर चलो, thank बोलिए, you, मैं thank you. हिंदू हूँ, जी मैं जी गौरव, सनातनी हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हूँ। बिल्कुल ये गौरव मत कहिए नहीं नहीं वैसे तो मैं सनातनी हूँ, हाँ लेकिन मैं सेक्युलरिज्म में मानता हूँ। ऐसे अपोलोजेटिक मत होइए। जहां आप जी। ये होते हैं ना, क्यों हो भाई? आप आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों अपने लिए पैदा करना चाहते हैं? आप हिंदू हैं, बोलिए आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, बस आइडेंटिटी क्राइसिस बात की खत्म। बात आप कर रहे हैं। आज रोहिंग्या वाला न्यूज़ तो सुना ही होगा आपने। बिल्कुल सुना है सर। रोहिंग्यास, ये क्यों हो रहा है? जो रोहिंग्यास को दिल्ली में ऑफिशियली बसाया जा रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट भी इसमें कंप्लिसिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंप्लिसिट है। ये क्यों हो रहा है? हिंदुओं हिंदुओं को बंधुआ समझ लिया गया है। जी। बंधुआ वोटर, बंधुआ वोटर समझते हैं ना आप? कि हिंदू भक्त है, ये अंध भक्त है, हिंदू तो कहाँ जाएगा? जाएगा तो जाएगा कहाँ? ज- जबकि दूसरे जो लोग हैं वो किसी को भगवान नहीं मानते, किसी के भक्त नहीं बनते, वो पीछे से प्रेशर करते हैं, अच्छा दबा के प्रेशर करते हैं, कोई भी हो जाए, और अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं उनके प्रेशर के आगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता रचना जी के इस चैनल पर, क्योंकि रोस्ट के लिए बनाया गया है। आप समझ जाइए इशारों इशारों में मेरी बात। नहीं, समझ गया मैं, बिल्कुल समझ गया। नहीं, तो आपको एक होकर आपको प्रेशर बनाना होगा। आपने छोटे मोटे विवाद भूल जाइए हिंदू भाइयों। let's do one thing. I just create another stream like this once a week. I'll try to do where we are just talking about. Last week also we talked about the social issues. Ke liye we'll have to talk because we have some serious issues to talk about, as well as boycott Bollywood in a way that is funny and engaging and all that. So I just want to I have अरे तो फनी में अर्चना जी बॉलीवुड क्या करता है? बॉलीवुड तो हिंदुओं के खिलाफ ही है। इस बात को तो मानिए। बॉलीवुड की बात कर लीजिए, चलिए मैं और कोई बात नहीं करता। नहीं आप जो Gaurav and Rocky ji, whatever you guys are doing right now, whatever you're saying is absolutely 100% the golden truth. With this is we cannot beat around the bush. ऐसे मतलब बात नहीं करने से कुछ नहीं होगा. We have to continue talking, and I'm glad that this kind of awakening has happened. For me, at least, it has happened with Sushant Singh. Unfortunately, after his demise, I was like, Right. Yeah. what the heck is happening? Kya hai? And I don't know, Judwa movie, Judai movie, and all those movies. I used to watch 20 times. ऐसे ही जाके first day first show से like I cannot even imagine ये loser जो है इसका. How was I even like able to see his face now? I cannot even stand him. मतलब not even 1 second I can see his. So it's just yeah. Right, ma'am. And the awakening has come at the right moment. So a last closing comment I would put is don't. I mean, ma'am, we cannot ease this pressure of boycott Bollywood one bit. Yeah. I would personally urge you, don't move your feet off the gas. Yeah, We are yeah. going at good speed and we cannot afford to slow down. Exactly. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Gaurav ji. ऐसे ही बैंड बजाते रहिए, मैं आपसे मिलता रहूंगा. Okay. जय श्री राम. Thank you. So here, I just want to, Gauraji, I'll just finish quickly what I had in agenda. I have a few more things, but I'll take this up next week. A lot of things happening in South India also that you guys have to know. Fan club का कुछ अलग ही level का bullshit चल रहा है वहाँ पे. I just have to show you guys what people are doing down south in the name of fandom and stardom and all that. And the big heroes are not saying anything when fans are fighting so blatantly. Twitter पे इतना गंदी गालियाँ ये सब कुछ देते हुए एक दूसरे को. It's just so shameful and just sad. Anuji, sir, I am not planning to watch Kartikeya 2. I have not watched a single movie in the last 12 years, and I'm not planning to watch anything. The only movie that I watched is Chichore in the last 18 months. That was what I watched. So, yeah. अनुज जी देखिए, इस तरह से आपको ट्रैप किया जाता है. कभी कोई देशभक्ति की फिल्म दिखाकर, जैसे पीछे कोई मूवी आई थी जिसमें अत्याचारों के बारे में दिखाया गया था. मैं खुलकर नहीं कह रहा हूँ. अभी सावरकर जी के ऊपर कोई मूवी आ जाएगी, अभी भगत सिंह के ऊपर कोई मूवी आ जाएगी, अभी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के ऊपर मूवी आ जाएगी. आपको तरह तरह से ट्रैप किया जाता है. अरे बॉलीवुड तो बॉलीवुड है. अगर साउथ की भी बात करते हैं तो साउथ में ये देखिए उसमें पैसा कौन लगा रहा है.
आपको पता नहीं होता, यहीं के लोग जाके पैसा, उसके क्रेडेंशियल देखिए और फिल्म आपको अच्छी लगती है, मान लीजिए भगवान कृष्ण के ऊपर फिल्म है, आपको देखनी है, मैं फिर कहूंगा थिएटर में पैसे और टाइम वेस्ट मत कीजिए, 1 महीने के अंदर वो टीवी पर आ जाएगी, उसको देखिए आराम से। And there was something या और also कोई going on very late. Yeah. और नहीं, कोई नहीं. जुगाड़ कर लीजिए, ठीक है। बस ये आप उसको देखना चाहते हैं उस तरह से देख लीजिए। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, रचना जी आपने कहा बॉलीवुड की बात पर ही फोकस रखें, बॉलीवुड को ही देख लीजिए। अभी हमारी जो बूढ़ी अम्मा है रत्ना पाठक शाह, वो क्या कहती हैं, ठीक है ना, वो तो बॉलीवुड से है ना, उनको मॉडर्न बनना है, उनको एजुकेटेड बनना है, वो पागल पागल हो जाती हैं ये सुनकर के औरतें करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। Exactly. ठीक है ना। That was something that was completely uncalled for. And ऐसे ही मतलब if anybody is making fun of your own customs and rituals and everything, तुम मतलब सहोगी क्या? What is that? That उसका भी बजाएंगे एक बार बैंड, no problem. We should not tolerate now. Welcome, Judy. We How should are you? not tolerate. I'm good, RNS. Hello, Gupta ji. I just came Yes. to talk about Lal Singh Chadda. In fact, I shared a tweet with you, RNS, on your WhatsApp. If you get the time, check that tweet. This person has explained so well. Like, we can't make copy paste movies from the Hollywood and just make these movies because they worked well and because it was executed well by those Hollywood stars, whether it's Tom Hanks or anything. We should see whether it relates to our Indian culture, our Indian history. Now, Forrest Gump, she has explained that why was Forrest Gump made and how they recruited their US soldiers for the Vietnam War. What was the strategy of recruiting low IQ men for that Vietnam War? I don't think any time in our history Indian Army has ever done such a stuff. So how do you mix up two different strategies? What happens in US does not mean that it happens in India and vice versa. So you get your facts right before you make a copy paste of the movie. That's the thing. So that was my point, and it was such a good tweet. That person who has tweeted that tweet, and she has explained how these people copy pasted without even knowing the true facts of the recruitments in the Indian Army. And they just show this idiot Amir Khan behaving like more like Mr. Bean and less like Tom Hanks in the Indian Army. I don't know whether that uniform also belongs to Indian Army uniform or which uniform, I don't know. That's the thing. So has anybody, till now have ever seen a Jawan or an Indian Army this way, this clown acting this with this IQ level in our army? Maybe it happens in the West. I don't know. Maybe it happens anywhere else. I really don't care. But it never happens in the Indian Army this way. And I don't know why, why the army never takes any objection, why any of our agencies, central, efforts take objection for such ridiculous cartoon stuff showing them to this state. Really, that's the most saddening part, that the common people have to voice their voices and fight for them, and they can't put up and say that this movie cannot be shown or this movie cannot be portrayed showing our Jawans, our army people this way. I really fail to understand why don't they ever voice their voices of boycotting. They use these Bollywood bhands to dance in their shows, and why do they require these people? Why can't they take true heroes of our country who are really there? Whether the Olympic players or whether the whichever ones who have won. There are so many unsung heroes in our country. Use them. Why do you need these Bollywood bands for you to dance in your shows and to do things in your? Only without them your show will be not complete. Is that the case? So anyway, if they support, they don't support, we don't care. We will be boycotting them left, right, and center. That's final. Whether Arjun Kapoor says anything or what is he going to do? He's telling that let whole Bollywood. They killed Sushant Singh. They killed so many. Are they going to kill now all of us?
all everybody who is boycotting, and it's not only the SSRians who are boycotting, it's worldwide. In India, everyone is boycotting Dancing Theatre. Are they going to kill all of us? That's the question we should need to ask Arjun Kapoor. That you will say that, oh, we are going to. So what are you going to do? We will keep on boycotting. We will. It's not only because of Sushant Singh we are boycotting. We have been blinded. Sushant Singh opened those blinds for us, and we now see the true colors of Bollywood. Tomorrow, even if you make a Desh Bhakt movie, and if you make a movie favoring the country, opposing the mafias, we will not fall for those traps, because you guys are shapeshifters. You change your colors according to your benefits. So we will not fall for that trap also. So make a Desh Bhakt movie or make any movie, Bollywood will be boycotted till all this dirt from Bollywood is not washed out. That's simple. That's a true fact. So I'm really frustrated and really angry with the the way these people come out to say that, oh, we are being boycotted. You will be boycotted for what you did for Sushant Singh. You took away a very good actor. You took away a very good human being from us. So you will be. Bollywood is dead from June 14, 2020. Get it straight, get it right. That's all, Rachna. Thank you so much for letting me vent out my frustration. Take care and check the WhatsApp when you get the time of this person, which I send you. Okay. Yeah, Thanks. so- Thanks. Thank you. तो वेकेशन में हो गए इतना मतलब chill मार यार, don't worry about all Yeah, these. you make such sessions, then the vacation goes all down the drain. That's the thing. Okay. I just came back from over there. Style made a session on Arjun Kapoor. Then I was, because your disturbance was this, I was watching over there for some time. Then I came back again. So everywhere I go, it's some session which makes your blood boil. So so it's back to reality. So that's the thing. So it's okay. So this is reality. We go on vacation for a fantasy world. So we come back to reality. So it's okay. Great. So anyway, take care and thank you all. Thank you, Judy. Yeah. No, I'll just continue next week. Gauraji, I just have a class in 5 minutes, but please, any closing comments? Okay, closing comments. I got your point. See, as a closing comment, I just want to say that whatever this Arjun Kapoor is saying, first of all, we should bash him. Yeah. On whatever platform we can, in large numbers. And whatever threatening language he's using, this shows his frustration. Yeah, exactly. Nothing else. Exactly. But that doesn't mean we should tolerate all this bullshit. The problem earlier also about I'm saying with Rocky, that we have been extremely tolerant. So our tolerance has been misunderstood as our weakness. So that is the point. Tolerance, see, excess of everything is bad. Excess of tolerance is also bad. And just if you say वही बोलते हैं ना हमको कि schools में when the kids are going to school, if you see something, say something. So अभी तक क्या बोला गया है कि it's okay, it's all good, whatever, blah 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 and everything, and we have been shown stories and movies that have been hiding the real truth. So अभी तो हम लोग जाग गए हैं, and we'll just have to continue doing whatever we're doing. So So whatever bullshit somebody says, we can't always ignore, because it encourages, and further we are abetting him to do, and abetting him and abetting others to do the same. Exactly. So हम जैसे ये कोई कहता है, अब जैसे किसी ने कह दिया कि भाई तुम किसी गधी ने कह दिया कि भाई तुम करवा चौथ रखूंगी, मैं तो पागल हूँ, विधवा होने पर ये होता है. तो जो उसके बाद रोस्टिंग हुई, जो उसके बाद उसकी बैंड बजी, वो बहुत जरूरी थी. Exactly. No, this is all good. This is great things are happening. Yeah. Just I'll do one thing. I'll just try to see, and we can have these serious discussions as well, along with our meme reviews and everything, so that, because we have to understand what the pulse of the common man is also, because we have to see where our brothers and sisters are, and try to support as much as we can. Okay, Gauraji, thank you so much, and we'll see you guys next week. Thank you, Anuji. Please join
Anytime you want, you're welcome to come hang out, and you can also co-host like Gaurav ji. Okay. Co-host कर रहे Thank थे. you so much. Thank you so much, Rachna ji. Thank And you. it was very nice. I have come after, I know. I think, after a long time, after I think 8 or 7 months on your channel. Wow. Yeah. So, Yeah, am I right? Am I right? Yeah, I have yeah, come yeah. 7 months, 6 months. Okay. I don't know, but I haven't seen you in a while. Yeah. या एक प्रॉब्लम और है, मैं आपको बताना चाहूंगा. थोड़ा सा मैं जो कमेंट करता हूँ ना, वो डिसअपीयर हो जाते हैं. तो प्लीज काइंडली लुक इनटू दैट. मैं जुड़ता हूँ, आप हमेशा लाइव नहीं आता, कमेंट करता हूँ. कमेंट मेरे पढ़ते ही डिसअपीयर हो जाते हैं. थोड़ा सा प्लीज उसमें देखिएगा इस आईडी को. Let me check. रिक्वेस्ट है आपसे. Check with the admin में कोई है, if it's blocked or something, I'll just check and make sure it's not. Okay, Pooja ji, thank you so much. Yeah, we just finished a little bit of roasting. अभी है कुछ बाकी. I'll just do it next week. Until next बाकी week. बहुत I really liked and I really enjoyed sharing the screen with you. And somebody told me I am a Senapati. So I said, what about Rachna ji? I said, Rachna ji is the empress. नहीं. Okay, thank you. चलिए, bye. Thank you. Okay. Thank you so much.